गाबजोन आंतोनीन पेटयल्लें आसा आनी मूर्ती आमी इन्स्टॉल करतल्या जेन्ना इल्लोसो वाव रेनोवेशन ह्या कपेलाचें केल्या उपरांत ह्या कपेलाचेरूय देवाचो आशिर्वाद आपणे गोंयक सायबा ही आमची सगळी मागणी आमी एक करुया आनी आमी बाबा मुखार दवरून जेजून शिकयले मागणे सगळे आमी म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राय संभायो तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी. Here and gracing the occasion. Proud moment for us. So. ते स्वीकारचे याद करपी अशे कितलेशेच कार्यकर्ते म्हाका दिसता, कितलेशेच ह्या गांवचे तांचे वांगडी अशे दिसता म्हाका. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार. आयज आमकां खबर आसा हो खीण सगळ्यां खातीर म्हणजे 13 तारीख जेन्ना येता पळय न्ही, 13 डिसेंबर, तेन्ना एक वेगळेपण घेवन येता. आनी मनोहर भाईक याद करता आसतना म्हाका सदांच दिसता की तांच्या बरोबरचो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता म्हणून जो संबंध आयलो तो म्हणटा तसो 2005 सालच्यान. आणि ते 2005 सालच्यान जेन्ना लागींच्यान भाईक पळय तेन्ना एक इट वॉज अ डिफरंट करिझमा, ही वॉज अ डिफरंट chemical composition altogether. And when it comes to a different personality, म्हाका दिसता he was been loved by everybody. And जेन्ना because he's been loved by everybody, it's not that जेन्ना भाईक चीफ मिनिस्टर जावपाची संद मेळ्ळी and when he was a part of this policy making and coming up with different policies, हे जेन्ना आमी पळयले पयली, it was not the other way round that he came out with a policy and then been loved by the people. It was the other way round that he was loved by the people and hence he came up with all the policy making decisions. आणि सगळे स्कीम्स जे आसा पळय न्ही, जे आयज आमचे जे सूत्रसंचालक असले तांच्यांनी सांगले, त्याच बरोबर श्री मायकल लोबो हांच्यांनी मेन्शन केले. पण म्हाका दिसता दर म्हजें ल्हानपण जेन्ना हांव याद करता किंवा जेन्ना 18 वर्साचेर पयले वोटींग येयले तेन्ना याद करता पळय न्ही, तेन्ना मनोहर भाई जे आसलेले पळय ते आतां इट वॉज नॉट लायक बीजेपी, बट इट वॉज फर्स्ट दॅट इट वॉज मनोहर भाई. समटायम्स अ फेस टू द पार्टी मेक्स इट ऑल टुगेदर अ डिफरन्स. आणि कशें मनोहर भाई आसलेले. आणि मनोहर भाईंची ही कला जी आसा म्हणजे ही वॉज लायक अ मॅग्नेट. He was attracting everybody towards himself. आणि म्हाका दिसता ती कला जी आशिल्ली ताच्या खातीर ते अजात शत्रू कशे आशिल्ले. 14 बार हमले तो मैंने सहे हैं अपने शरीर के अंदर. पूरे शरीर में लोहा है, प्लेट्स है, बम्बों और गोलियों से. मैंने कभी सोचा नहीं था कि आतंकवाद कभी समाप्त होगा, और वो भी कश्मीर का आतंकवाद जहां जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंके जाते थे, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता था, जब जवानों पे गोलियां चलती थी, जब जवानों की बॉडियां कट कट के उनके घरों में, हर गांव में, पूरे देश में आती थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती थी, पर फौज को यह हुक्म नहीं था कि अगर जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको गोलियां चला दी, उनको शहीद कर दिया, आपको अगर गोली चलानी होगी तो दिल्ली से पूछना होगा. आपने मनोहर पर्रिकर जी को दिल्ली भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दिया, और
मनोहर पारिकर जी ने पूरी फौज को फ्री हैंड दे दिया कि दिल्ली से कोई नहीं पूछेगा, एक गोली चलेगी 100 गोली का जवाब दिया जाएगा। और जवाब दिया। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, हमने कभी नहीं सोचा था कि दुबई के बाद वो नवाज शरीफ को मिलने पाकिस्तान में जाएंगे और जिंदा वापस आएंगे। वो पाकिस्तान आतंकवाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री। कभी बराक ओबामा ने कहा था, गए मौत का कफन बांध करके, आपके लिए, हमारे के लिए, पाकिस्तान के आम आवाम के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम महात्मा गांधी की सोच पे चलना चाहते हैं। हम नया रास्ता अपनाना चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान में गए, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। और क्या किया पाकिस्तान ने? 15 दिन के बाद पंजाब के अंदर पठानकोट और दीनानगर की घटना, हमारे एयरक्राफ्टों के उस कैंप के ऊपर हमला कर दिया। बनेगा तो MS बिट्टा की जख्मी शरीर हमारी लाशों से गंदी हथेली की तरह निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। प्रथम राष्ट्र था, है और वो एक रहेगा। यहां करनैल सिंह इछड़ू, जिन्होंने गोवा की जंग के अंदर अपना रोल अदा किया, वो मनोहर पारिकर जी का सपना था, जो आपके चीफ मिनिस्टर सावंत जी ने पंजाब के अंदर उनके घर घर में जाकर के उनकी माता, उनके बच्चे, उनके परिवारों को मिलकर के फाइनेंशियली जो हेल्प कर सकते तो की, उनका मान सम्मान किया। ये आज हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ता पे चल रहा है हमारा। और अब भी चाइना जैसा देश जिससे दुनिया घबराती, खड़े हो गए नरेंद्र मोदी जी उस बॉर्डर के ऊपर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर कहा, जिस 56 इंच की छाती का कई पॉलिटिकल पार्टियां मजाक उड़ाती हैं। मैं बीजेपी से नहीं हूं, पर मैं आजाद विचारधारा पे हूं। मैं पुराना कांग्रेस ही हूं, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र था, है और आखिरी साथ तक रहेगा। और उसके बाद पारिकर जी मौत की जंग लड़ रहे थे। और एक तरफ जंग थी, उन सरहदों के ऊपर भारत मां की वो जंग कि मेरी भारत मां को आंच ना आए, मेरे जवानों को आंच ना आए। एक तरफ मौत की जंग, एक तरफ भारत मां की सरहदों की जंग। वो जंग उन्होंने जीती। अगर सर्जिकल ऑपरेशन ना होता, क्या 370 धारा हटती? 370 धारा 75 साल की कैंसर की बीमारी को, जहां हजारों जवानों की शहादत हुई, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ। आज उनका वो दिन है शहीदों को याद करने का। 26/11 की घटना हुई, पूरे देश के अंदर आतंकवाद था, रोज सुना करते थे। आज आप दिवाली के दिनों में दिल्ली ब्लास्ट हुए, ट्रेनों के अंदर बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, जयपुर के अंदर, राजस्थान में एक दिन के अंदर 120 लोगों को मार दिया गया। कोई दिन ऐसा नहीं था, सुबह अखबार पढ़ते थे, रात को टीवी पढ़ते थे, आज यहां गोली, कल वहां गोली, कल वहां फसाद। पर आपने वो योद्धे दिए। अगर आप ना बेचते उनको, आप ना जिताते उनको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उन पे विश्वास ना करता, उनको जिम्मेदारी ना मिलती, क्या 370 धारा हटती? क्या आतंकवाद समाप्त होता? नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि यही एक राष्ट्रभक्त है जो एक चप्पल पहन करके डिफेंस मिनिस्ट्री चलाता रहा और कभी ये नहीं कहा मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, और पाकिस्तान को ये कहते रहे हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, अगर तुमने छेड़ा तेरी आंखें निकाल के तेरे हाथ में दे देंगे। ये मनोहर पारिकर जी ने बोला था। आजचो दीस हो एक म्हज्या खातीर इमोशनली एक मिक्स दीस आसा। वेगळे वेगळे कार्यक्रम सकाळच्यान जातात,
आनी सगळ्यो यादी एक भितर उफाळून येता. त्याच बरोबर हांव बाबा कडल्यान कितें शिकला हाची एक खंय तरी स्फूर्ती येता. आनी तांणी खंयच्याय मायकल बाबान म्हटल्या भशेन खंयच्याय पोझिशनार असले तरी खंय तरी ते गोंया बद्दल सतत उलयत रावताले. गोंयचे मागीर ती पर्ऱ्याची काळंगां फाटीं हांव ते एक म्युरल आनी एक आसा काळंगां घेवन मायकल बाबा बरोबर. हांव फाटीं इलेक्शना कडेन पावलो तेन्ना ते कोड ऑफ कंडक्टा खातीर दिसता म्हाका बंद केल्ले, आतां परत केला अशें दिसता. तशेंच आतां हे नवे म्युरल पळयल्यार खंय तरी मायकल बाबानूय पर्राक मार्केट करपाची कशी ती कला आनी ताच्या खातीर मे बी तांचे बाबा बरोबर सारखे जमताले वेवलेंथ. एक तो म्युरलान पर्राचो फेमस रोड दिसता म्हाका. सो हो एक नवे पर्राचे एट्रॅक्शन जातले. तो अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक मातसो इनफेमस जाला, पण सारको मॅनेज केल्यार एक बरे पर्राचे एट्रॅक्शन आसा. होय जंक्शन एक पर्राचे एक एट्रॅक्शन जावन बरो हे जातलो, ताका रिस्पॉन्स येतलो. आमकां प्रिविलेज आसा पर्रीकार हें नांव आमचे फॅमिली नेम आसा ती, आनी हे जंक्शन ताका बाबाचें नांव दिवन मनोहर पर्रीकर जंक्शन एक सगळ्या पर्ऱ्याच्या लोकांचे MLA मायकल बाब, पंच, सरपंच हांचे हांव एक आभार मानता आनी म्हजे 2 उतरां सकयता. त्या पर्रीकराचे उलोवपाक आमकां 24 वरां सुद्दां कमी पडटली. एकदां आमी जेन्ना राज्यसभेन तांच्या वांगडा एकदां पळोवपाक गेले दिल्ली तेन्नाची आनी एक गोश्ट सांगता की पर्रीकर बिझी तर प्रचंड आशिल्लो. म्हणजे हांव केन्ना केन्ना म्हणटालो तुमी उलयतना सुद्दां घोड्यार बसल्या सारकेच आसता म्हणून, फ्री आसना. कारण मागीर कळटाले ते की तो व्यक्ती जी देशा खातीर वाहून घेता, जी समाजा खातीर वाहून घेता ती अशी कायम बिझीच उरता. ताका घराय लक्ष दिवपाक मेळना. जो ताका समजून घेता ताका ताचे बिझीपण, ताका व्यस्तपण आसता पळय ते ताचे कळटा. आनी एक तुमकां सांगता की पर्रीकर हो असो लिडर इतलो बिझी आसूनय सकाळी संक न्यूजपेपर वाचतालो. ताची 1-2 गोश्टी सांगता तुमकां की पर्रीकर एकदां सकाळी च्या बीन जाली की तो 6:30 सुमार समजा पेपरार न्यूजपेपरार कितें रॉंग आयलें न्ही, फोन हमखास कोणे बरयला ते ताका लँग्वेजी वयल्यान कळटाले आनी तो फोन लायतालो सकाळी 6:30. इतलो की हांव एकदां उठलोच आसनाशिल्लो पण फोन हे जाताले कितें वाचताले. सो घरांतली म्हणटाली अरे पर्रीकराचे फोन येता, नाका जाल्ले कितें बरयलां आसतलें म्हणून. सो ताका दिसतालें पर्रीकरा हो मुद्दाम घेना आसतलो म्हणून. तो मागीर कितें करतालो प्रायवेट फोन म्हणून आसता एक, जो तुका रिकॉर्डूय करपाक मेळना, अननोन नंबर म्हणून येता, तो 1 सायडेड आसता, ताचे वयल्यान तो लायतालो. तो मागीर उखल्लो अरे पर्रीकर उलयताले. तो केन्नाच चीफ मिनिस्टर उलयता बीन अशें नाशिल्लें, म्हणजे व्हडले पण नाशिल्ले, पर्रीकर उलयताले. सांग 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 हांवेंच पेपर वाचलेलो नासता आनी तो ताका आतां उत्तर कितें दिवपाचें. सो सांग सांग म्हणटा ना, मागीर तो सांगतालो अरे अशी अशी हेडलायन आयल्या पळय ते आपल्या तोंडान बेश्ट घातलां, आपूण आपल्याक तशें म्हणपाचें नाशिल्लें, आपल्याक अशें 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 म्हणपाचें आशिल्लें. उलोवपाक सुरवात करतालो खंयच्याय फंक्शनाक जाल्यार तो एक धाकटुली स्टोरी सांगतालो आनी तेजी प्रत्येक स्टोरी म्हाका दिसता सद्गुरू पाटीलान आपल्या बुकान घातलेली आसा आनी तेणें बुकूय पब्लिश केल्लो आहा तो. आनी पोर्रीची स्टोरी तेणें केली वॉटरमेलनाची काळंगां. आनी पोर्रीची काळंगां जी कमी जायत गेल्ली ती परतून फार्मर आमचे पोर्रीचे एकठांय जाले तेन्ना आमची डिलायला लोबो सरपंच आसली, तेणें फुडाकार घेतलो आनी हे बी जे आहले हे बी परतून आनी एकदां फामाद केले. आनी फामाद करपी कोण? मनोहर भाई पर्रीकर. आख्ख्या वर्ल्डाक ही स्टोरी गेली की पोर्रीची काळंगां फामाद आनी पोर्रीची काळंगां गोड आनी तेजे जे बियो आहल्यो ते बियांचे काम करपा खातीर आमकां धाकटे भुरगे आसतना हे फार्मर यूज करताले म्हणून, म्हणजे दे वर युजींग अस
not only to eat the watermelon but they wanted the seeds. जे पाटल्यान सायडीक ते आमकां पाटलो दोत्ताले आनी सांगताले बियो हितून उडय म्हणून, आनी त्या खातीर आमी एक पाटलो थिंगा दवरला फाटल्यान, पाटलो आनी तितून काळंगा घातल्या आनी 2-3 काळंगा कातरून दवरल्या, आनीकूय उरल्या, ते शिरो घेवपाचे उरल्या. सो पोर्रीची काळंगा सगळ्यांनी घेवपाक जाय हे बाईन आमकां तेन्ना सांगलेले. आनी हे म्हाका दिसता आमी पारंपारीक आमचे जे यूथ आहा हिंगा, भुरगे जे आहा पोर्रीचे, तेंच्यांनी ही परंपरा फुडें व्हरपाक जाय. डिफेन्स मिनिस्टर ते खूप जाणा एक मेजर जे आहले जे आमचे तेणे जे स्ट्रायक केलो हेचेर पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्रायक, तो एक फामाद जालो. पूण तेचे भितर कितल्यो फायली तेणे क्लियर केल्यो, जे इंडियेक डिफेन्स सिस्टमाक जे वस्तू जाय आसले ते तोच जाण आहलो आनी यूज टू शेअर विथ व्हेरी फ्यू पीपल. तेका फामाद जावपाक नाका आहलो तेका. आनी म्हाका दिसता असले मनशाक आमी उगडास करप आनी तेजे थिंकींग फुडें व्हरप, तेजे थिंकींग जे तेणे म्हटले लास्ट वर्ड्स बी पॉझिटिव्ह, हे माइंड सेटअप आमी फुडें व्हरप आनी आमच्या भुरग्यांच्या माइंडान घालप बी पॉझिटिव्ह. whatever you want to do in life, you have to be positive. आपूण ते करतलो, आपूण फर्स्ट क्लास येतलो, बी पॉझिटिव्ह, you will come first class. I want to do something in life. I want to be a teacher. I want to be a lawyer. I want to be a chartered accountant. I want to be a businessman. You have to be positive. Positive thinking भुरग्याच्या मनान हाडपा खातीर तेणे निमणी उतरां ब्रिजार रावन उलयली की गोंयच्या लोकांनी पॉझिटिव्ह थिंकींग करपाची गरज आहे, स्पेशली द यंगर जनरेशन. अँड द सीड्स हॅव टू बी सोन बाय द पेरेंट्स, बाय द ग्रँड पेरेंट्स इन दियर माइंड दॅट यू नीड टू बी पॉझिटिव्ह टू बी समबडी इन लाईफ. डॅडी फार्मर आहलो म्हणून आपुणूय फार्मर जावचो ना, फार्मर जावपाक इम्पॉर्टंट ना. तुम्ही खंयच्या ऑफिसान आसा, केद्या व्हडले बिझनेस करा, पूण काळंगा लावपाक विसर नाका. हे तेजो मेसेज आहली. बिकॉज द सीड्स वॉट आवर एन्सेस्टर्स हॅड सोड, जे बी लायल्ले एन्सेस्टरांनी ते काबार जायत वयताले आनी ते बी परत आमचे मनोहर भाईन परत पोर्रासून किल्लायले आनी सांगले की हे तुम्ही पोर्रीची कायमा जी आदी फामाद आहली ती चालू दवरपाक जाय. आणि हे बी जे आहले इज नॉट ओनली अबाउट वॉटरमेलन, इट इज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द यूथ. जे आमचे भुरगे जे आहा हे कशे प्रोग्रेसिव्ह जातले, एड्युकेशनान तांकां कसो हेल्प करप, बायलांक कशी हेल्प करप, लग्न जावपाक आहली ते चेडवांक कशे हेल्प करपाक जाय. म्हणजे जे विजन तेजे आहले, असलो विजनरी लिडर आमकां गोंयांक मेळलो आनी फायनली देशाक मेळलो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. आमी हो जंक्शन नेम केला आफ्टर व्हेरी ओन गांवचो भाव पर्रीकर. प्रदीपान सांगला त्या प्रमाणे पर्रीकर जेन्ना सीएम जालो, पर्रीकर जेन्ना मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर जालो, आमचे गांवचे नाव त्याच्या वांगडा स्टेटाकूय जोडले आनी सेंट्रलाकूय जोडले. सो दिस इज अ वे ऑफ थँकिंग हिम फॉर बींग हियर, आमचो गांवचो भाव म्हणून. आनी म्हाका सगळ्यांनी खूब सांगला अबाउट हीज लायफ. एकूच सांगूंक सोदता, वेन आय वॉज अ सरपंच आनी आमचे हे पंचायत घर, पर्रा पंचायत घर वॉज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. आख्खे लीक जाताले एंड आय वॉज ऑलवेज टेलिंग मायकल हे पंचायत घर केन्ना म्हाज्या हॉड्ड्यार पडटले काय म्हणून. इट वॉज इन सच अ बॅड स्टेट. तेन्ना वहिनी आनी आमी सगळीं पंचायत मेंबर्स. एंड आय रिमेंबर दॅट टायम मायकल टेलिंग मी, ही वॉज द MLA, go and meet Parrikar, he will do your work.